So life as it is for people with disability is so much problematic. There's so many issues here. I mean, you can't begin to describe the problems of people with disabilities. Even me, as a researcher and thinker who's blind, who comes here, I face discriminations, ignorant behaviors of people. I mean, it doesn't affect me anymore. I know it's nothing to do with me. It's because of people's ignorance. But imagine the situation of people who are living here, who are not educated, who don't have family support, who don't have organizational support, who don't have qualifications. I mean, you can't imagine the condition under which they are living. So I think within that context, I thought it's important to host a press conference to try to get the help of media. I hope you guys are going to be helpful. So one of the things that we need to make the public aware, the government aware, I think government is aware, but they need to be more aware and implement, is about the rights of persons with disabilities. So Persons with Disabilities Act was created in 1995 in India. It's a national law, Indian law, to make the lives of people with disabilities easier. So there are provisions within the rights of persons with disabilities. So rights of persons with disabilities is the latest version of the Persons with Disabilities Act. So Persons with Disabilities Act was Persons with Disabilities Act was passed in 1995, but it was recently amended, and now it is called, in 2016, Rights of Persons with Disabilities. So in this right, there are some clause, there are some articles that state governments have to implement in order to make people with disability and their lives easier. For example, the law says that you need to give minimum 5% job reservation, minimum 5% reservation in educational institutions enrollment admission to people with disabilities. So at the moment it's not really there here in Arunachal officially. It needs to be there. So and the other clause that is required from rights of persons with disability to be implemented in the state is 4% minimum reservation in government jobs for people with disabilities. And there are so many other provisions within the rights of persons with disabilities that the state has to implement, which hasn't yet been implemented. And one of the biggest things is that the rights of persons with disabilities says that state has to appoint a state commissioner for people with disabilities, permanent office, with all kind of powers. When the rights of persons with disabilities are being violated, he becomes or she becomes the main judge to deal with the violation of the rights of persons with disabilities. So that position at the moment in Arunachal is not appointed. There is commissioner for persons with disabilities, but it is a temporary position and it doesn't come with all the powers that is required to deal with the problems that are being faced by people with disabilities because of the violation of rights of persons with disabilities. So this is just one example, and a few of the clauses I mentioned earlier, reservations in jobs and education, these are not being implemented. So that's why I thought it's important to host a press conference and ask your help to raise awareness about the rights that is already there, that has been passed, rights of persons with disability nationally, and it needs to be implemented in our state to try to improve the lives of persons with disabilities. So that's why I think it is very, very important for the media to raise awareness about this to the masses. And I request all of you, please, to write about this, talk about this, present all the information we are giving today to the masses. And please also pass on our message to the government. Do more efforts to raise awareness about the rights of persons with disabilities. Please, please, please implement the provisions of persons with disabilities, and most important, please appoint a permanent commissioner of persons with disabilities in the state with the required rights to carry out the responsibilities to deal with the violation of the rights of persons with disabilities in the state. I also request all of you to call upon the political parties here, especially the oppositions,
when the rights of persons with disability, when the law that has been nationally passed is not implemented by the government, the political party in position, in power, it becomes the responsibility of the opposition party to say that national law that has been passed is not being implemented by the state government. Please, I request National People's Party, I request Congress to take up the rights of persons with disability who are also their voters, to take up raise the voice to get the rights of persons with disability implemented in the state. तो और बाकी जो PWD लोग हैं, जैसे जेन्युइन वाला PWD लोग नहीं हो के भी बहुत लोग हैं जो मतलब पेक में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, जो भले कम डिसेबिलिटी है पर वो लोग उसको परसेंटेज डिसेबिलिटी का बढ़ा के वो लोग ही प्रॉफिट अवेल कर पाते हैं। ऐसे भी बहुत केस देखा है। तो उन सब से भी रिक्वेस्ट है ना, क्योंकि जो रियल में डिसेबल होते हैं उन लोगों को कितना तकलीफ होता है ना, कितना सफ़र करना पड़ता है और के, तो इसीलिए मतलब इसमें भी गवर्नमेंट लोग और जो डॉक्टर लोग जो सर्टिफिकेट बना लेते हैं वो उन लोग से भी रिक्वेस्ट है ना कि वो लोग भी मतलब प्रॉपरली वेरीफाई करके ही सही लोग को ही रिजर्वेशन दे, क्योंकि रिजर्वेशन इस कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा हम लोग का ऊपर मेहरबानी कर रहे बोल के नहीं है। ये एक्चुअली हम लोगों को जितना लेवल का तकलीफ मिलता है उतना तकलीफ हम लोग मिलता है कि हम लोग का अमंग में जो तकलीफ लोगों का अमंग में ही कंपटीशन होना चाहिए बोल के, उसके लिए जॉब वगैरह में रिजर्वेशन मिलते हैं और पेंशन भी उन लोग को ही मिलता है जो 80% to 90% समथिंग जो बेड से हिलने नहीं सकते ऐसे लोग को मिलते हैं। लेकिन ये सब में भी जैसे कि गलत सर्टिफिकेट बना के गलत लोग उल्टा एवेल होता है ना, तो इन सब से भी रिक्वेस्ट है। हाँ तो सर मतलब जैसे कि वो तो बाकी सब प्रॉब्लम का बात है। और जब ये कमीशन वाला लोग कभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उन लोगों ने भी जितना भी जैसे कि प्रोविजंस होना चाहिए, फैसिलिटीज़ जो मिलना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, वो भी दिया नहीं जा रहा था स्टेट में। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया था कि मैंने स्टेट चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखा और स्टेट सेक्रेटरी को भी IPCS का कमिश्नर को भी लेटर लिख के उन लोग से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग जो एज पर द रूल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल बुक में जो 5 points प्रोविजन दिया जाता है, एक्सेम्पशन फ्रॉम जॉब पी एप्लीकेशन फीस and 5% reduction in minimum cut-off marks for qualifying any job examination and compensatory time of not less than 20 minutes per hour of examination for PWD candidates। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट इन वेरियस जॉब एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफरेबली ऑन ग्राउंड फ्लोर फॉर कन्वीनियंट ऑफ PWD कैंडिडेट्स होना चाहिए बोल के मैंने चीफ सेक्रेटरी से और कमीशन से लेटर दिया था। पर उन अभी तक जब तक ये उन लोगों को अप्रोच किया था तो उन लोगों ने अभी तक तो ये ग्राउंड फ्लोर वाला और एक्स्ट्रा टाइम तो दे दिया, लेकिन इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 5% रिलैक्सेशन वाला मार्क्स में जो एनी जॉब एग्जाम में जो मिलते हैं ना वो अभी तक कमीशन वाला ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और वो एक्सेम्पशन फ्रॉम जॉब पी एप्लीकेशन भी कमीशन ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये हम लोग का राइट्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का राइट्स है, तो उससे कमीशन से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो ये इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जैसे बाकी प्रोविज़न वो लोग पहले मुझे नहीं दे रहा था, लेकिन इस चीफ सेक्रेटरी को अपील करने के बाद बहुत बार ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कराए। तो इसके लिए भी जो वो लोग जो अपने से करना चाहिए क्यों नहीं हो रहे ना, ये सब का रीज़न बहुत है। यहाँ पे 3 चीज़ें याबिक मेंशन किया, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इज ये 3 चीज़ें है ना, ये प्रोविजंस राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज देता है। उनमें से यू नीड टू हैव जब एग्ज़ाम्स देते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पीपल विद डिसेबिलिटी दे गेट 5 marks waiver, ठीक है। अगर पासिंग मार्क लेट्स से इट्स 50, अगर इफ़ यू गेट 45 marks यू अलाउड, यू आर कंसिडर्ड पास्ड। तो 5 marks का रिलैक्सेशन मिलता है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इट्स लीगल, ठीक है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दैट इट्स इलीगल अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और एक और ऑप्शन होता है एजुकेशन में, एवरी 1 hour ऑफ एग्ज़ाम 20 minutes एक्स्ट्रा टाइम उनको दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी ज़्यादातर मिलता नहीं है, अगर तुम मांगे उनको मिला है, बाकी स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक दे गेट इट, इट्स नॉट जो इम्प्लीमेंट होने के बाद ना जो भी जो डॉक्टर से प्रेस्क्राइब वाला सर्टिफिकेट लेके आने से मिलता है सर, ठीक है। तो सो दिस इज़ वन थिंग ना कि मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, मिला बाद में जब उन्होंने मांगा ना। एंड एक तो पहले ही वो होता ना एक्सेसिबिलिटी ना होता, एग्ज़ाम्स
और वो लोग मतलब accessibility को they don't take that into account ना. For example, जिसके पास locomotive disability है वो लोग lift नहीं बनाते, ramp नहीं बनाते. ये तो बहुत common sense है ना. You can hold your examination in the ground floor. The कोई people with disability because of the lack of awareness ना 5-6 माला ऐसे crawling करके जाते हैं. So these are like basic things that is mentioned, that is given by Rights of Persons with Disabilities law, जिसको implement करना चाहिए, जिसका awareness फैलाना चाहिए. I think these are basic things. Or I think we shouldn't stretch this forever, but a couple of things I think जो तुमने mention किया उसको elaborate करना चाहिए. You mentioned about ANSU, APSU, student unions need to have some kind of wing where representation of students with disabilities. उनका representation होना चाहिए ताकि वो बता सके हमारा difficulty है क्या है, so that the unions can take up the responsibility to get the message across. And even in political parties, they need to have advisors, people with disabilities, or their representation. तभी पता चलेगा ना इनको people with disabilities उनका voters का problem क्या है, उनको implement करवाना चाहिए. So I think a lot of efforts needs to be done. But I think this is just a starting point. I really thank you all for coming here and listening to the problems of people with disability. And I really ask all of you to pass on the message, raise awareness. Request the government to implement the laws, ask student unions to work for the rights of students with disabilities, ask political parties to represent the voting interests of people with disabilities. Again.